Last question. That's a long story. Can summarize. Yeah. जाता था लेकिन मैं जाता था लंबा जाता था लेकिन 3 दिन की छुट्टी के लिए जाता। Tell you a bit about my story. Excuse me if you can't hear me so well, but I have some problem with my ear at the moment. At the Ayurvedic clinic, they wanted to clean my ears, but since they did it, I can't hardly hear it. So I'm hoping it's straight now. That's why I'm going to be talking now. How do I join Krishna consciousness? I will translate. So Mataji, Hare Krishna. So Mataji बता रही हैं कैसे माताजी ने ज्वाइन किया कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मठ में, स्कॉन में कैसे ज्वाइन किया? Well, when I was a very young girl, around about 17 years old, before that, maybe 16 years old, I wanted to see where the music bands came from. So माताजी जब 16 साल की थी, तब वो जानना चाहती थी कैसे म्यूजिक बैंड आया, उसके बारे में जानना चाहती थी. म्यूजिक बैंड. We all love music, and my sisters, actually my 2 sisters and me, we decided we're going to save our money and go overseas to see when these great music bands, we want to go and see them, and we want to travel the world. माताजी अपनी सिस्टर के साथ, एक बहन के साथ जाना चाहती थी विदेशों में, सब जगह जाके म्यूजिक बैंड सीखना चाहती थी और बहुत इनको रुचि थी, देखना चाहती थी कैसे म्यूजिक के प्रति रुचि थी, उसके बारे में सीखना चाहती थी. So we decided we're going to save our money. And we worked very hard, but the goal was we're going to do this. तो बोल रही थी वो जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी बचा के सेव करना चाहती थी, इसलिए विदेशों में जा सके अपनी बहन के साथ और म्यूजिक के बारे में सीख सके. म्यूजिक में बहुत रुचि थी. And it wasn't easy. Those days, regular wage was only $28 a week. The wage in those days, yeah, not for everyone, but normal job,
$28 a week. $28 per minute per daily का work करने का $5. Yeah, and so we had to save $3,000. $3,000 इनको बचाने work करते. And working hard, decided no going out, no spending the money on anything, but just saving. तो कहीं भी बाहर नहीं जा सकते और कहीं सेविंग करना बाहर जाके spend करें. So it took about 3.5 years. So $3.5 साल लगे $3,000 इकट्ठे करने. And I was living in Sydney in a small 1-bedroom little unit, not even a unit, like small 1-bedroom with my sister and my girlfriend. So Mataji बोल रही थी small bedroom में रहती थी और अपनी sister के साथ और एक महिला में. And after some time, my sister and girlfriend, they went to other places and I was there alone. And some friends came. तो माताजी की जो sister थी और उनकी जो friend थी कहीं और चले गए. कोई दूसरे दोस्त. But no one had any work except me. और पर किसी के पास कुछ काम नहीं जिससे वो अर्निंग कर सकते. माताजी बस के लिए अर्निंग कर रही. But one day, my friends, they went near the park in Sydney, main part of Sydney. एक दिन सिडनी में एक पार्क था, वहाँ उनके फ्रेंड्स गए And there were the Hare Krishnas. और वहाँ उन्हें हरे कृष्णा Making kirtan. वो कीर्तन कर रहे थे. And my friends were looking, this is great. और माताजी के फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, बहुत अमेज थे और बहुत अच्छा है. But the police didn't like us. पुलिस था पसंद नहीं कर रहे. And in a few moments, a big van came. और कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा And they said, you are not allowed to sing and dance here. Get in this van. और वो बैंड गाया था कुछ कर लेके आए थे. आप लोग को यहाँ परमिशन नहीं और सबको बैंड में भरने. And they were going to take them away. और उन लोग को परीक्षा उनको ले जा रहे. But they yelled out to my friends, please go to our temple and tell our temple president we have been taken away by the police. तो वो जो हरे कृष्णा डिवोटीज थे वो माताजी के दोस्तों को बोले आप जाओ टेंपल जाके टेंपल प्रेसिडेंट बोलो कि हमें लोग बैंक में ले जा रहे हैं. So the temple president, he said, thank you so much. Please will you come to our Sunday feast? तो जब टेंपल प्रेसिडेंट के पास माताजी के दोस्त गए टेंपल प्रेसिडेंट को धन्यवाद देते बोलते हैं आप संडे फीस्ट आए. And I said, oh, they came and told me. And I said, great. Yeah, we should go at Sunday. We'll go. तो माताजी के दोस्त माताजी के पास आके बताते हैं सब चीजें. माताजी बोलते बहुत अच्छा अब हम लोग संडे फीस्ट जाए. And when Sunday came, I said, okay, let's go. Oh, we can't go. We've got no money for the bus, you know. और जब संडे आया तो माताजी अपने फ्रेंड्स बोलते हैं चलो अब चलते हैं लेकिन इनके पास बस से जाने के लिए किराया भी नहीं. So I said, I've got some money. We'll catch a taxi. तो माताजी अर्निंग करती. माताजी बोली मेरे पास अच्छी है हम लोग टैक्सी करेंगे बस नहीं क्या. Prabhupada said, one who likes to eat will cook well. बात बोलते थे जिसको खाना पसंद है तो अच्छे से बनाना आना चाहिए. I didn't know I was a cook, but I did like to eat. माताजी बोलते हैं पता नहीं कैसे कुकिंग करें और मुझे खाना पसंद. So for me, the thought of missing out on a feast, oh no, we have to go. माताजी को फीस्ट
उसको मिस नहीं कर सकते। माता जी बोली चलो चलते हैं। We went, we had kirtan, and they gave a talk, and then we had prasadam. And what do you think Mataji wanted the most? तो माता जी बोल रहे हैं कि हम लोग गए वहाँ और वहाँ लेक्चर सुने, प्रसाद था, कीर्तन था। तो आप लोग पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है, क्या सबसे अच्छा लगा होगा? So some devotees were talking to my friends. तो कुछ भक्त बात कर रहे थे माता जी को। I was hearing a little bit, माता जी सुन रहे थे but I didn't understand. और कुछ समझ नहीं आ रहा था। But he sure liked those sweets. हम ऐसे दिखा रहे थे। I found out later that there were gulab jamuns and sweet rice. And that was 52 years ago, and I still remember. 52 साल पहले की बात है, हमारे को अभी भी याद। So after that, we had bought the ticket for the boat, the ship, to go to London. के बाद शिप का टिकट्स जहाज से जाने के लिए लंदन जाना था, के लिए टिकट करवाया। But I had a friend in Sydney. माता जी का एक दोस्त सिडनी में। He knew the Hare Krishnas. और उनको हरे कृष्णा जो ड्यूटी के बारे में पता था। So I told him, we went to the temple. And he said, oh, the Hare Krishnas, they're good people. तो जब वो माता जी से मिले तो बात की तो बोले कि हरे कृष्णा वाले बहुत अच्छे। Yes. So then I went with my sister, only one sister. The other one got married. And we went on the ship to England, to London. माता जी अपनी बहन के साथ लंदन के लिए। And when we got to London, we got jobs and we started working. I was 20 and a half. माता जी जब लंदन पहुंची, 20.5 साल के थे, और वहाँ अपनी जॉब किया और वर्क करने लगे। And we met some friends at the, what would you call, at the club. We met some friends at the club. माता जी कुछ दोस्तों से मिले club। Yes, and when it became my birthday, I said, will you come to my birthday? I am turning 21. तो माता जी उनको इनवाइट किए, जो दोस्त थे, तो इनवाइट किए कि मैं अभी 21 साल की होने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे बर्थडे में आएंगे। They said, yes, we would love to come. So they had a van, a van, and we all got in, about 20 of us. And on the way, all of a sudden, they went, toot, 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 toot. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They didn't sing Ramo. They didn't sing Ramo. They sang Rama. सब लोग बैंड में बैठे, बर्थडे के लिए जा रहे हैं, सब लोग बैंड में बैठे, बीच में वो लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे। और फिर वो माता जी बोल रहे हैं कि वो रामो नहीं बोले, रामो, रामा बोल रहे। One day, I was at the Sunday feast in Brisbane, and I came down the stairs. One lady came up to me. She said, please, can you tell me which mantra is right? The one we know is the old one, or this new one? Of course, I said to her, the old one. माता जी एक दिन ब्रिस्बेन में थे, जब वो अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, एक लेडी मिली और वो पूछने लगी कि कौन सा मंत्र सही है, पुराना वाला कि नया वाला? माता जी ने बोला, यस, पुराना वाला। So you see,
why it is very important to chant the mantra like Prabhupada taught us. तो माताजी बोल रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें मंत्र कैसे चैंट करना है जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया. One time we were on Harinam. The devotees were singing this Harirama. And one man came up and he said, chant the mantra properly. एक बार डिवोटीज हरिनाम कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया वो बोलने लगा भक्तों से आप जो मंत्र बोल रहे हैं वो सही से बोलिए मंत्र. Very important. Understand? बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes. Okay? No more Hari Ramo. Okay? No more Krishna. It's Krishna. Okay? All right? No more Ramo. No more Krishna. Krishna. I say Krishna. It's Krishna. Krishna. Yeah. कृष्ण बोलना है और राम बोलना. Okay? राम और कृष्ण. So we went to the party, and after that, we decided to go to Europe. वो पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी के बाद आपने ये डिसाइड किया कि अब यूरोप जाएं. And we went to work in Amsterdam. Yeah, sister, girlfriend. We all went to work in Amsterdam. माताजी और इनके दोस्त के साथ ये एम्स्टर्डम गए वर्क करने. And we started at the hotel and we're cleaning the rooms. होटल में रूम क्लीन करते एम्स्टर्डम में. Yes. And one day after work, we went on a walk near where we were staying. एक दिन वर्क के बाद ready to go to work. We went on a walk. walk करने के लिए एक दिन गए. वर्क तो हो गया. Yes. walk करने के लिए. But before then, you know George Harrison? Does anyone know George Harrison? He was part of that band that we wanted to go and see, but we never seen him. तो माताजी और उनके फ्रेंड्स उनको देखना चाहते थे और उनको कभी देखे नहीं है. He brought out a song, and it was called My Sweet Lord. और जॉर्ज हैरिसन ने एक सॉन्ग किया था उसका नाम था माय स्वीट लॉर्ड. Beautiful song. बहुत सुंदर song. And in that song, there was a Hare Krishna mantra. और उस सॉन्ग में हरे कृष्ण महामंत्र. And my sister, my girlfriend, and me, we loved that song. और सभी माताजी की जो सिस्टर थी और उनके फ्रेंड सभी वो गाने को बहुत पसंद करते. So we used to sing it all the time. ऐसा उसको सिंग करते थे. And then we went to this meditation center. It was called a Macrobiotic Meditation Center and Cafe. Microbiotic. Yeah. Microbiotic meditation center में गए. And we went upstairs. और सीढ़ियों से ऊपर गए सेंटर में. And there was an auditorium. You know what an auditorium is? Yeah, yeah. ऑडिटोरियम में गए. And on the door, there was a sign. Hare Krishna program, Wednesday, Thursday, and Friday. ऑडिटोरियम में सलाहगृह में सब जगह साइन बोर्ड लगे थे. तो लिखा था वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे Friday. वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को हरे कृष्णा क्लासेस होता है 3 दिन. When I was young, I went to the Sunday school every Sunday. माताजी जब यंग थी तब वो संडे स्कूल में जाती. And I asked my Sunday school teacher, what does God look like? माताजी ने अपने संडे स्कूल टीचर से पूछा भगवान कैसे दिखते हैं. And he said,
You don't ask questions like that. And I thought, if there's a question, there must be an answer. So I said, I'm not going to go there anymore. So I went away enjoying life. But when I got to Amsterdam, I started to miss my family, my sister and my girlfriend. They were always together, and I'm alone. There's a saying in English, two is company, but three is a crowd. तो और माताजी बोल रहे हैं कि जो उनकी सिस्टर थी और गर्लफ्रेंड थी मतलब साथ में रहते लेकिन माताजी अकेले रहते थे। माताजी अक्टूबर मुहावरा बता रही कि दो लोग रहते हैं तो कंपनी रहते हैं, साथ में रहते हैं, जब तीन हो जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। Not in Krishna consciousness. We like many devotees. माताजी बोल रहे हैं बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं, ये मटेरियलिस्टिक है। So I was most of the time alone, and I became sad, and I started to miss my family, and I started talking to God and saying, God, there must be more to life than this. You know, sometimes I'm happy, and now I'm very sad. Please, will you help me? तो माताजी बहुत दुखी रहते थे और अपने परिवार को याद करते थे और उनकी जो सिस्टर और गर्लफ्रेंड थी वो साथ में रहते थे और जब दुखी रहते थे तो फिर भगवान के पास, भगवान क्या मोटो है, क्या पर्पस है देश या लाइफ का और आप क्या मेरी हेल्प करेंगे। And 3 days later, 3 दिन बाद I met the Hare Krishnas और माताजी हरे कृष्णा in Amsterdam. And it was a wonderful program. बहुत सुंदर प्रोग्राम था And they had the best halava. और वहाँ बहुत सबसे अच्छा हलवा साथ बना थी। I don't think I've hardly in my whole 52 years tasted a halava as good as that. माताजी बोल रहे हैं 52 साल में ऐसा हलवा कभी टेस्ट नहीं किया। So I used to go there every day. Every time there was a program, I was there. माताजी जब कोई प्रोग्राम होता था हम चलते थे, वहाँ जाते थे। I liked the chanting, and I began to like the philosophy because it was starting to answer my question about being sad, lonely, right? माताजी प्रोग्राम बहुत पसंद करते थे और जब भी प्रोग्राम होता था वहाँ जाते थे और माताजी धीरे-धीरे चैंटिंग पसंद करते थे और धीरे-धीरे फिलॉसफी भी कृष्ण को भी पसंद करने लगे, समझने लगे। Especially the halava. ज़्यादा हलवा। So they were asking for some help for a festival they were going to have in London. It was the Rath Yatra festival. लोग कुछ मदद चाहते थे, मदद चाहते थे। बहुत बड़ा रथ यात्रा फेस्टिवल लंदन में आयोजित किया जा रहा है। मदद चाहते थे, माताजी से मदद की। And they gave a flyer with the address on it that we can come and help. उन्होंने एक फ्लायर बनाया टेम्पलेट और उसमें लिखा हेल्प करने के लिए सेवाएं थी। So after work one day, I went to this place. It was a factory, but it was transformed into a temple. And on the outside was all yellow, and on the inside was all yellow. माताजी वर्क करने के बाद वहाँ गए और वो सेंटर एक ओल्ड फैक्ट्री था, उसको सेंटर में कन्वर्ट कर दिए थे। बाहर से पूरा पीला था, येलो कलर, अंदर भी येलो कलर। And I knocked on the door, and my godbrother and sister, they came to the door, and they said, "Hello, what would you like?" And I said, "I've come to help you." And they looked at me, because you know the Christians, they also do that.
They told me after, we didn't know who you were. माताजी वहाँ नॉक किए और जब उनकी गॉड ब्रदर और गॉड सिस्टर आए तो बोले कि व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे। माताजी बोले कि हम आपको मदद करने आए। तो लोग शॉक थे, थोड़ा सरप्राइज थे। कई बार क्रिश्चियंस भी आके नॉक करते थे, बोलते थे हम आपकी मदद करना चाहते हैं और मदद नहीं करते थे। So I said, you wanted some help. You asked at your program for some help. Oh, yes, come in, come in. And they told me later, Jai Shishi Radha Govinda, Jai Shishi Gornikai, Shingadev Pula, Nicha. They told me later, they thought that I was some Christian. बात करने लगे, फिर माताजी बोला आपने तो फ्लैट दिया था, बोला था कि हेल्प करने के लिए आइए, अब मैं हेल्प करने के लिए आ गई। तो उन्होंने बोला कि उनको बहुत अच्छा लगा, बोले हाँ हाँ आप आ जाइए। फिर उन्होंने बाद में बताया कि क्रिश्चियंस आते हैं कई बार हेल्प करने की जगह, हेल्प बोलते हैं हेल्प करेंगे, इसलिए वो लोग ऐसा हेल्प कर रहे हैं बाद में। Because I was the only one that came to help. माताजी बस एक ही अकेली थी जो हेल्प करने के लिए आई। So they invited me in and sat me down and talked to me. And Bimadev, my god brother, he told about the principles. And he said, we don't gamble, don't do that. We don't take drugs, don't do that. We don't smoke cigarettes, I don't do that. We don't have sex outside of marriage, I don't do that. And he said, and we're vegetarian. Oh, I do that. I'm not a vegetarian. And he told me that when the people eat the animals, kill the animals and eat them, he said, they are God's children. And he cries when they kill the animals. Oh, that touched my heart. तो माताजी बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने बिठाया, उनके जो गॉड ब्रदर्स थे, गॉड सिस्टर थे, उनको बिठाया और पूछने लगे। फिर जो गॉड ब्रदर थे बोलने लगे कि हम लोग क्या क्या नहीं करते, चार नियम बताएं। बोलने लगे कि नशा नहीं करते। माताजी बोले या मैं नहीं करती नशा। और फिर उनके बारे में बताया कि आउटसाइड मैरिज सेक्स नहीं करते। तो माताजी ने बोले या आई डोंट डू दैट। फिर उन्होंने बताया कि हम No gambling. No gambling, no intoxication. जुआ बोले कि जुआ नहीं खेलते। बाबू ने बोला हाँ हम नहीं खेलते। फिर बोले कि हम मांस नहीं खाते। तो माता जी बोला नहीं नहीं मैं खाती हूँ मांस। फिर वो बताया कि जब हम मांस खाते हैं कि सभी भगवान की संतान है, तो भगवान क्या है रोते हैं। तो माता जी ने सुना तो उनके दिल को छू गया। So I decided to become a vegetarian overnight. माता जी ने डिसाइड किया कि वो वेजिटेरियन बन जाएगी, रातों रात वेजिटेरियन। I was very attracted to this. Every time I walked through that door, a beautiful sigh of relief from that world out there to this beautiful, peaceful place. जब भी माता जी बाहर से आती थी, टेंपल में जो सेंटर था, तो बहुत रिलीफ मिलता था। So I used to go there every day after work. Every day. माता जी अब डेली जाने लगी, वर्क के बाद आती थी, सेंटर में जाने लगी। And the devotees would say to me, one day you must come. We have a program in the morning at 4:30. तो धीरे-धीरे डिवोटीज ने बताया कि आप हमारा डेली प्रोग्राम होता है 4:30 बजे, आप उसमें आइए। And they gave me a service for London. तो और उन्होंने एक सेवा दिया लंदन की for the Rath Yatra. The festival was the Rath Yatra. And to make flags, but they didn't have a sewing machine. तो उस माता जी को सेवा दी गई थी फ्लैग्स बनाने के लिए रथ यात्रा में, और उनके पास मशीन नहीं मिलने वाली। I said, I have a sewing machine.
माताजी ने बोला कि मेरे पास मशीन. I said, I will ask my sister, because my sister and me, we bought it together, right? तो माताजी बोला मैं अपनी बहन से पूछती हूँ. And yes, she said, okay. So I took the sewing machine to the temple and started helping sewing the flags. माताजी अपनी बहन से पूछा, बहन ने एग्री कर दिया. फिर उसके बाद जो मशीन थी, सारी मशीन उसको लेके टेंपल आए और फिर टैक्स बनाने. Every day going to work, coming after to the temple and sewing the flags. तो डेली वर्क पे जाते थे, फिर आते थे वहाँ से टेंपल आते थे, टेंपल में फिर सेवा देते थे. And it was so nice there. Before I was so distressed, sad, but the temple, oh, was so beautiful. पहले माताजी हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, उसके बारे में सोचते थे. जब से वो सेवा करने लगे, डेली टेंपल आने लगे और एक सेवा करने लगे, टैक्स बनाने लगे, बहुत खुश रहते थे. So, because the devotees kept on asking me to come to the Mangalati, I decided one day, yes, I'm going to come to the Mangalati. तो devotees daily उनसे बोल रहे थे कि आप मंगल आरती में आइए. इसलिए माताजी ने डिसाइड किया कि मैं मंगल आरती. And one day I went home and I packed my bags. And I said, my sister said, where are you going? And I said, I'm going to live in the temple. माताजी जब सामान पैक कर लिए तो उनकी सिस्टर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो माताजी बोलते हैं, मैं टेंपल में हमेशा के लिए रहने जा रहा हूँ. She said, I knew it. You're going there every day. I knew. माताजी की बहन थी, बोली थी, मैं पहले से जानती थी कि आप वहाँ डेली जाते हैं, तो पहले से जानती थी आप वहाँ जाएंगे रहने. Because before that, I thought about it. I can't leave my sister alone. I have to find someone for her someone to live with my sister. माताजी ने सोचा कि मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए किसी को ढूंढ के उनके साथ रहने के लिए होता है. And there was 2 American girls, and they were looking for somewhere to stay. And I said, my sister and me, we have one place, but I'm going to live in the temple. So would you like to stay with my sister? तो अमेरिकी माताजी थी, तो माताजी ने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको जगह चाहिए थी रहने के लिए. माताजी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं तो टेंपल रहने जा रही हूँ, मेरी बहन अकेली है, तो क्या आप रह सकते हैं उनके साथ? And she was happy with that. और लोग बहुत प्रसन्न. So I go to the temple with my bags. I don't think they even knew that I was going to do this. माताजी अपने बैग लेके टेंपल जा रहे हैं और माताजी सोच रहे हैं कि वो लोग को नहीं पता है कि मैं अपने बैग लेके टेंपल में. And I came to the door and the devotee said, have you come for Mangalati? और माताजी डोर पे आए और आप मंगल आरती के लिए आए? And I said, yes, and I've come to stay forever. And that was 52 and a half years ago. So the Fiat is still going on. And, you know, I love to be a devotee. And sometimes there was difficulties, but I always pray, Krishna, please help that I can become strong and go through these difficulties. डिफिकल्टीज आती हैं, माताजी हमेशा प्रे करती हैं कि वैसा कोई स्ट्रेंथ दें जिसको कृष्ण कॉन्सेप्ट में वैसा बनी रहे. And every day, in those days, when you joined the temple,
you started chanting 16 rounds on the day that you joined. Yes, in those days. पहले होता था जो कोई भी टेंपल में रहने के लिए आता था तो 16 माला की दिन में डेली करना पड़ता. And the devotees were very serious to follow Prabhupada's instruction. Rise early before 4 a.m. and attend the whole morning program, and your whole day will be auspicious. ये बहुत स्ट्रिक्ट था और डिवोटीज सभी प्रभुपाद के फॉलो करते, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और राइज अर्ली 4 बजे के पहले सभी को उठना रहता था और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना रहता था और बोलते थे कि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन आपका मंगल है. Very nice training. बहुत अच्छा ट्रेनिंग. And when I was young, before I went overseas, I used to see so many people, and they always were good at something. माताजी यंग थी जब वो सीख नहीं गई थी फॉरेन में नहीं गई. माताजी देखते थे सभी में कुछ न कुछ अच्छाई थी, कुछ न कुछ किसी चीज में बहुत अच्छे थे. And I would pray, talk to God, and say, God, everyone is good at something, but I'm not good at anything. Can you show me what I will be good at? माताजी भगवान से प्रे करते थे कि भगवान सभी लोग किसी न किसी चीज में अच्छे हैं लेकिन मैं तो किसी चीज में अच्छी हूँ. आप मुझको बता सकते हैं कि मैं किस चीज में अच्छी. Many years went past, and बहुत साल बीत गए. you know when he showed me? आपको पता है कब उन्होंने बताया कि मैं किस चीज में अच्छी. On the second day, I was in the temple. He showed me the first thing. तो जब दूसरा दिन माताजी टेंपल में थी तो माताजी को पहली चीज माताजी अच्छी है वो उनको पता चली. On the first day, you don't go to the shop and buy your beads. No, you have to sit, string beads. One bead on, tie the knot. Next bead, tie the knot. Many hours to make 108. तो पहले दिन वहाँ शॉप में दुकान में जाके बीट जो होती है माला 108 होती रहती है उसको खरीदने के लिए नहीं जाते थे, वहीं बनाते थे. एक माला बनाते थे उसको ट्राई करते थे, घंटों लगते थे बीट बनाने में 108. So the next day, the devotee said, come on, hurry now. Come on, we're going to sing on the street. They said, yeah. तो दूसरे दिन ने बोला कि अभी हम लोग जाएंगे हरिनाम सड़कों पे हरिनाम करने. So we went, and they said, we're going to sing. I'm going to do 1 hour singing, and then we change over and we give out some magazines in Dutch. In Dutch, that was in Amsterdam is Holland, so we in Dutch. Capital of Holland. It's capital of Holland. Yeah, Amsterdam. माताजी बोल रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक घंटे हरिनाम करेंगे क्या मैगजीन देंगे डच जो वहाँ की लैंग्वेज है हॉलैंड हॉलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम वहाँ डच में देंगे मैगजीन. It wasn't really a magazine like today. It was just Xerox and then stapled together. ये अभी जैसे मैगजीन है वैसे मैगजीन जेरॉक्स कॉपी होती है उसको स्टेपल करके. So I did 1 hour singing. माताजी ने एक घंटे हरिनाम किया. And they said, would you like to try to sell some magazines? उन्होंने बोला कि आप क्या ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे कुछ मैगजीन बेचने के लिए. I said, I never sold anything in my life. I said, माताजी बोला मैं कभी अपने पूरे जीवन में कुछ बेची नहीं. you just go to the people, offer them a magazine, let them look, and then say, 1 guilder with a big smile. 1 guilder is Dutch money. 1 coin, 1 guilder. उन्होंने बोला कि आप जाइए लोगों के पास मैगजीन दीजिए वो लोग मैगजीन देखेंगे आप उनको एक बहुत अच्छा स्माइल दीजिए और फिर उनको बोलिए एक गिल्डर मनी है. So when we went back to the temple, everyone counts the magazines and counts the money.
तो जब टेम्पल जाते हैं सभी लोग एग्जिट काउंट करते हैं कितना एग्जिट गया और कितना लक्ष्मी आया. And you'll never guess. I sold the most magazines and got the most money on the first day. आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे कि माता जी ने सबसे ज्यादा मैगजीन बेचे और सबसे ज्यादा लक्ष्मी इकट्ठा करके आए पहले ही दिन. So God showed me, you can sell. You see? माता जी बोल रहे हैं कि भगवान ने दिखाया कि आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं. And I still sell. I still like to sell books. माता जी बोले अभी भी मैं पसंद करती हूँ बुक्स सेल करना. And after 2 months in the temple, Prabhupada came. Because when we went to Ratha Yatra, Prabhupada got sick. He came to Amsterdam. No, he got sick. He was in London. We were going to Ratha Yatra in London. But Prabhupada got sick. So, but we still went. We went. Yeah. So, 2 महीने बाद फिर माता जी लोग गए. प्रभुपाद जी लंदन में थे. प्रभुपाद जी बीमार थे. वहाँ गए. And there were 5 devotees already waiting 6 months to get initiated. और 5 भक्त थे 6 महीने से वेट कर रहे थे प्रभुपाद जी की. So after we came back from Ratha Yatra, Prabhupada came 2 months later. Ratha Yatra was the end of June and Prabhupada came in August. So we again all went to London. तो 2 महीने बाद फिर लंदन गए. And the 5 devotees that were going to get initiated, they were going to London, and the temple president said, you will go too. 5 भक्त जो एम्स्टर्डम से लंदन जाना चाहते थे स्टेशन के लिए. तो टेंपल प्रेसिडेंट थे माता जी बोले आप भी जाइए. And as I was walking out the door, I looked up at him and I said, Dhananjay, am I going to get initiated too? तो माता जी टेंपल प्रेसिडेंट को देखने लगे. बोले कि मैं भी इनिशिएटेड होने वाली हूँ. मैं भी दीक्षा प्राप्त करने वाली हूँ. And he said, yes. माता जी ने बोला, टेंपल प्रेसिडेंट ने बोला yes. And I met them in last year for the 50th anniversary of the opening of Bhaktivedanta Mana and installing Radha Gokulananda. And after we went for a Prabhupada disciple retreat. So 58. What was that? 58 Radha Lambanish. Yeah, there was their 50th anniversary in London last year. Last year, 50th anniversary Radha Lambanish installed. And I said to Dhananjay and Balagopal, who were the temple president, and his wife, thank you for looking after me in the very beginning. Mataji ने temple president से को धन्यवाद दिया. आपने beginning में बहुत अच्छा. They said that wasn't hard because you are so enthusiastic. उन्होंने बोला कि ये तो बहुत मुश्किल नहीं था कि आपने. So I guess that's why I was able to get initiated after 2 months. माताजी को 2 महीने बाद माताजी बहुत excited. And so we went to London. We met Srila Prabhupada. He initiated us, and we were in a big room, like this big room, full of people. माताजी और जो 5 थे हम लोग लंदन गए और प्रभुपाद जी से मिले. प्रभुपाद जी ने पूछा किया और एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ सब लोग बैठे. And if we were sitting up the back, we had to get up and walk to Srila Prabhupada to get our to say the principles and for him to give us our beads and our name. तो पीछे से हॉल के पीछे बैठे थे, वहाँ से प्रभुपाद जी के पास आना था
प्रभुपाद जी को 4 नियम बताने प्रभुपाद जी के। And I was a little shy and walking in front of them. Everyone is looking at you, right? You're walking up there, they're all looking at you. Oh, I feel so nervous, you know. सभी लोग देखते हैं जब दीक्षा हो रहा था, लोग देखते हैं और पीछे से आना और इससे माताजी बहुत नर्वस थी। And Prabhupada said, can you tell me the principles? And I told him. And then he said, and how many rounds? And 16 and 25 on a Kaddish. And he noticed that I was nervous. And he said, don't be afraid. He said, if you follow this process, you'll go back home, back to Godhead at the end of your life. Yeah. प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल 4 नियम पूछे और माताजी ने बताया और प्रभुपाद जी ने बोला मिनिमम 3 राउंड एंड ऑन एकादशी 25 राउंड। और फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि माताजी बहुत नर्वस है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप डरो मत और आप ये प्रोसेस को फॉलो करो और जीवन के अंत में आप भगवत धाम जाएंगे। And so Prabhupada was so kind. He wanted to meet us all and ask us, how are we going back to Holland? प्रभुपाद बहुत दयालु थे, तो हम लोग मिले अब कि आप कैसे हॉलैंड जाएंगे। And he said, what are you going to eat? कि आप लोग क्या खाएंगे? And the devotee said, we are making halava in the kitchen. भक्तों ने बोला तो हलवा बना रहे हैं। So on the way back to Amsterdam on the ferry, Balagopal and Ganajai, they seen I was always eating this halava. And Prabhupada said, oh, I first tell you, they said, Surabhi, my name Prabhupada gave me was Surabhi, Surabhi Devi Dasi. He said, your name is Surabhi Devi Dasi, the name of the transcendental cow, the giver of abundance of milk. उन्होंने बोला कि आपका नाम सुरभि है और आप सुरभि काऊ है, बहुत ज़्यादा दूध देती है। And so Balagopal, she said to me, Surabhi, how would you like to become the cook? And I said, well, I've never cooked anything in my life before, but okay, I'll give it a try. जो बाल जो माताजी को बोले कि आप क्या कुकिंग करना पसंद करेंगी, तो माताजी बोली कि मैं तो जीवन में कभी भी कुकिंग नहीं, लेकिन ठीक है मैं ट्राई करूँगी। So I knew they were seeing me and they were thinking, yes, Prabhupada said, one who likes to eat will cook well. वो लोग हमेशा नोटिस कर रहे थे कि माताजी हलवा पसंद करती है, कैसा हलवा खाती है। उनको याद आया कि प्रभुपाद जी ने बोला है जो अच्छा खाता है, पसंद करता है खाना, तो अच्छा बनाएगा, अच्छा कुक होगा। So God told me the number 2 thing. You see, I was asking, what am I going to be good at? दूसरी चीज भगवान ने उनको बता दी, माताजी मैं कितने अच्छे। So he answered my question, but he made me wait. भगवान ने उनकी प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन उनको थोड़ा टाइम दिया। And I've been a cook also for 52.5 years. माताजी अभी 52 साल से बहुत अच्छी। So you see, Krishna is in your heart. He's listening. अब देखिए भगवान कृष्ण आपके हृदय में, वो ऐसा सुनते रहते हैं। And when the time is right, he will answer your question. और जब सही समय आता है, तो आपको प्रश्न उत्तर देते हैं।
Thank you very much for listening. Hare Krishna. I cannot take questions. I have to go somewhere. प्रश्न नहीं ले पाएंगे, माताजी कहीं जाना है। Thank you for being such good listeners. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा श्रोता बनने के लिए। Hare Krishna. Thank you. Oh, glorious to the assembled devotees. Okay. I have to go to Krishna Priya Devi Radha Krishna. I have to go to the bathroom.